हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द टुडेज प्रॉब्लम। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिए दीजिए सो दैट आपको हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स आते रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी द टुडेज प्रॉब्लम। सो द टुडेज प्रॉब्लम इज fight. Okay, so let's solve this problem. Okay, so here we have given a problem statement. The problem statement is Spider-Man is fighting with a monster. The health condition of the monster is H. Okay, and Spider-Man has n moves. If he uses the ith move, then monster's health decreases by AI. Okay, so there is no other way to decrease the monster's health. Okay, so the monster is dead if its health becomes 0 or below. Okay, so here uh, he can't use same move more than one time. Okay, and if Spider-Man can win, print yes, otherwise no. Okay, so in input we have given, in first line we have given two integers, that is h and second is n. Okay, and in this h is the monster's health and n is for the moves which Spider-Man, okay, takes. Okay, and in the second line contains n integers, that is number of moves. Okay, so in this problem what we have to do, we have to uh, check if the Spider-Man can win or not. For that, what we can do, uh, uh, the monster, we can consider the monster is dead if its health becomes 0 or below. Okay, so the monster's health, if the monster's health is becomes 0 or below, that means in minus, then we can simply say that a Spider-Man win, else we'll say no. Okay, so here you can see that here we have given some sample input and output for this. Okay, so for this sample input the output should be yes. Okay, in this problem statement the Spider-Man can win, so the output should be yes in this test case. Okay, so so to solve this problem, what we can do, simply uh, we can solve this by using the two approaches. Okay, so let's see these two approaches. Okay, so here you can see that in first approach what we need to do, we have to subtract this moves, n number of moves from this h, that is monster's health. Okay, and if, and in the end if the result of this subtraction becomes 0 or minus in minus, then simply will print yes, else will print no. Okay, so we have to what we can do, we have to minus or subtract this n moves, that is n1 n2 जो भी है हम इसमें से h में से माइनस कर देंगे। ओके, सो कैसे करेंगे वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 10 में से पहले मूव करेंगे फर्स्ट, एक एरे है, इसका एरे का फर्स्ट एलिमेंट पहले माइनस करेंगे इसमें से। ओके, सो 10 माइनस 4, ओके, इसका रिजल्ट कितना आता है 6। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट हम माइनस करेंगे एरे का, दैट इज 5। ओके, सो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है 1। ओके,
देन थर्ड एलिमेंट माइनस करेंगे, सो 1 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है -5. Okay, so you can see that in this sample input the output becomes below 0. Okay, so in this problem if the output becomes 0 or below, we have to print yes. Else, if the output is greater than 0, then simply we have to print no. Okay, so here in second sample input, you can see that. Okay, so here what we can do, we will minus this number of moves or array elements from this H, that is monsters health. Okay, so first हम क्या करेंगे, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 16. ओके, सो आफ्टर दैट 16 में से सेकंड एलिमेंट हम माइनस करेंगे, दैट इज 5. ओके, सो 16 माइनस 5, आउटपुट इज 11. ओके, सो नेक्स्ट हम थर्ड एलिमेंट माइनस करेंगे. अभी 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आउटपुट आएगा 5, विच इज greater than 0. So we have to print no in this situation. If the output is greater than 0, we have to print no, and if the output is less than 0 or less than 0, then we have to print yes. Okay, okay, so this is the first approach to solve this problem. Okay, और सेकंड अप्रोच एक है. सेकंड अप्रोच में लेट्स सी द सेकंड अप्रोच. ओके, सो सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. कोई भी मतलब वेरिएबल लेंगे. लेट सपोज एक सम करके एक वेरिएबल लेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. ओके, सो इस सेकंड जो अप्रोच है उसमें क्या करेंगे, अभी हम ये एलिमेंट्स को एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे. ये सारे एलिमेंट्स का जो भी मतलब ये n जो मूव्स है, n नंबर ऑफ मूव्स, और ये जो सेकंड एरे है इसका एडिशन करेंगे हम. ओके, एंड अगर एडिशन जो है वो इससे ग्रेटर रहता है, मतलब एच जो मॉन्स्टर की हेल्थ है, अगर इससे ग्रेटर रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स रहता है, तो सिंपली हम यस प्रिंट कर देंगे, एल्स नो प्रिंट कर देंगे. ओके, सो सो इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं एक हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे दैट इज लेट सपोज सम, और उसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देंगे. और अभी इस सम में हम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं एरे के, उसकी सम इसमें स्टोर कर देंगे. ओके, सो फर्स्ट हम 0 0 को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे, दैट इज सो 4. देन सेकेंड एलिमेंट ऐड करेंगे, that is 5 equals to 9. then third element ऐड करेंगे इसमें, 9 plus 6 equals to 15. okay, so 15 is greater than 10. okay, so the output is yes. okay, in this sample input. okay, so let's see for this second sample input. इसमें भी हम क्या करेंगे, इस ये एरे के जो एलिमेंट्स है इसको हम ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि ये एलिमेंट्स इसकी एडिशन इससे ग्रेटर आती है क्या. ओके, जो एच है हमारा, जो मॉन्स्टर की हेल्थ है उससे ग्रेटर आती है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 0 को फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे 0 में, that is 4. then 5 plus then third element 6, इसको ऐड करेंगे तो इसका आउटपुट आता है 4 plus 5 9, और 9 plus
6, that is 15. Okay, so which is less than 20. ये जो है 15 20 से छोटा है, सो इसमें हम नो प्रिंट कर देंगे. Okay, so this is the second approach to solve this problem. Okay, so now let's try to write the code for this problem. Okay, so इसका कोड लिखते हैं अभी हम. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना है हमें, उसके लिए स्कैनर क्लास लिखेंगे एक. स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system dot in. Okay, then we have to take the two integer numbers, that is h and n. Okay, so for that we'll write integer h equals to sc dot next int, then integer second is n number, so integer n equals to sc dot next int. This is the second number. After that we have to take one array. Okay, that is for number of moves. Okay, so here we'll write one for loop. Yeah, so I'll write integer I equals to 0, then I is less than n, I plus plus. Okay, so inside this for loop, what we can do, we'll directly minus this elements one by one from h. So here we'll directly write h minus equals to sc dot next int. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली जो एरे के एलिमेंट्स है इस h में से माइनस हो जाएंगे. ओके, ओके, आफ्टर दैट what we can do, simply we'll write a conditional statement. For that we can take one variable and we can store the result inside it, or else we can directly write it in print statement. Okay, so I'll directly write it in print statement. So I'll write system dot out dot println, and inside this I'll write the condition, that is if h is less than equals to 0. Okay, जो h है, जो हमने यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्शन करने के बाद h की जो वैल्यू है वो अगर 0 या 0 से कम रहती है, यानी कि 0 या फिर माइनस में जाती है, तो हम क्या करेंगे, यस रिटर्न कर देंगे. हम क्या करेंगे, यस रिटर्न कर देंगे, नहीं तो नो प्रिंट कर देंगे हम. Okay, okay, so this is the code for this problem. Okay, so let's try to run this problem. देखते हैं ये कोड वर्क होता है क्या हमारा. सो सिंपली इनपुट कॉपी करूंगा मैं, इसको इनपुट में पेस्ट कर दूंगा. नाउ लेट्स क्लिक ऑन रन. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. Okay, output is showing. Okay, you can see that output is yes, which is correct. Now let's see for this second sample input. So I'll copy this and let's paste it here. Let's click on run. Now let's see. Okay, you can see that output is no.
Okay, which is correct. Now, let's see for this third test case. So I'll just copy this and let's paste it here और रन पे क्लिक करूंगा. अभी देखते हैं ये वर्क होता है क्या. द आउटपुट इसका यस आना चाहिए. Okay, you can see that output is yes. Okay, so अभी इसको सबमिट करके देखते हैं. जो सभी टेस्ट केसेस पास होते हैं क्या वो चेक करेंगे. सो लेट्स क्लिक ऑन सबमिट. Okay, now the test cases are running. Let's see whether all the test cases will pass or not. Okay, you can see that all the test cases has been passed. Okay, see, all the test cases passed. Okay, so this will be the first approach to solve this problem. Okay, अभी हम second. Okay, so what we can do, I'll just comment out this part. Okay. ओके, अभी सेकेंड अप्रोच यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं. ओके, सो सेकेंड अप्रोच में क्या करेंगे हम. लेट सपोज कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, उसको इनिशियली 0 से असाइन कर देंगे. ओके, देन विल टेक वन फॉर लूप, देन इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन n, I plus plus. Okay, after that, inside this for loop, what we can do, I'll just add the array elements in with sum. Okay, and store the result in this sum variable. Okay, so here we'll write sum plus equals to sc dot next int. Okay, so जो भी मतलब array के elements हैं उसकी sum इस जो उसकी जो भी addition है वो इस sum variable में store हो जाएगी. Okay, after that, here I'll write system dot out dot println, and inside this print statement I'll directly write we have to, in this approach we have to check if the sum is greater than or equals to h, जो मॉन्स्टर की हेल्थ है उससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या ये चेक करना है. सो हियर विल डायरेक्टली राइट सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, जो मॉन्स्टर की हेल्थ है. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यस प्रिंट कर देंगे. ओके, नहीं तो नो को प्रिंट कर देंगे. Okay, so this is the second approach. So let's uh, run this code and let's see whether this approach will works or not. So we'll click on run. Let's see whether it shows correct output or not. Okay, you can see that it also shows S. Okay, so let's try to submit this and let's see whether all the test cases will pass or not in this approach as well. So click on submit. Okay, now the test cases are running now. Okay,